So भाइयों, how does theatrical window affects the OTT selling price? Let's dive deep. Theatrical window is the amount of time a new film is allowed to be run in theaters after the end of which the movie will be pulled from the theaters and will be available on streaming platforms. Before streaming, or as we all call OTT in India, there used to be only satellite rights. एंड सैटेलाइट राइट्स मीनिंग कोई टीवी की राइट की जो वो कलर्स और सेट मैक्स ने पिक्चर के राइट्स खरीद लिए. एंड इन दोज टाइम्स द स्टैंडर्ड थिएट्रिकल विंडो वाज 6 months because satellite people had little leverage over the movie producers. With OTT, that window is now 4 to 8 weeks. पहले ज़माने में मूवी थिएटरों में काफ़ी चला करती थी. 2 महीने तक मूवी कंटिन्यूस लगातार चला करती थी और उसके बाद मूवीज़ की DVD भी आया करती थी. तो टीवी वालों के पास ज़्यादा लेवरेज नहीं थी. फिल्म मेकर सीधा कह देते कि हम तुम्हें भाई 6 months के बाद इसे टीवी पे लाने का मौका मिला था और वो कहते थे कि ठीक है भाई. तभी मूवीज़ 6 महीने के बाद टीवी पे आया करती थी. पर अभी 2 बड़ी चीज़ें हुई हैं. एक तो मूवीज़ फ्लॉप बहुत ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत घटिया है बॉलीवुड मूवीज़ की. और जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेरिकन कंपनीज है, ये दे आर रिलेंटलेस, दे हैव डीप पॉकेट्स एंड दे मेक श्योर कि दे गेट द मूवीज आफ्टर 4 weeks. When a film releases, one of these two things happen. First, either the movie goes super hit. In that case, producer of the movie fights to have the movie run in theaters for a longer period of time than the Netflix wants. And the second case is the movie flops and is out of the theaters within 2 to 3 weeks. Let's discuss the second case first because that's what's happening the 90% of the time today. When a movie flop, the trick is the sooner it is sold to Netflix, better the money you will be paid. If a producer decides कि नहीं भाई आमिर खान की बात मानूंगा मैं इस बार और उसने कहा था कि 6 महीने तक मूवी नहीं आनी चाहिए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे, तो इस बार मैं अड़ा हुआ हूँ, तो नेटफ्लिक्स भी कहेगा कि हाँ भाई साहब ठीक है, हम आपको फोर्स तो कर नहीं सकते, आप हमें 6 महीने के बाद दे दे मूवी, पर आज आपको जो हम 60 करोड़ ऑफर कर रहे हैं 6 महीने के बाद आपको सिर्फ हम 5 करोड़ ऑफर करेंगे. तो यू सी दैट चेंजेस द होल थिंग्स. नाउ प्रोड्यूसर इज इन डीप ट्रबल हियर because he has already lost the money because the movie flopped at the box office and he has already paid for the filmmaking, for the actors and all those things, so he is in big financial debt. और उसने सिर्फ अपने पैसे नहीं, जो उसके साथ स्टूडियोज थे, जो उसके को प्रोड्यूसर थे, उनका भी पैसा डूब जाता है एट दैट पॉइंट जब फिल्म टोटली फ्लॉप हो जाती है. फिर वो ऐसे डिसीजन नहीं ले सकता कि मैं भाई लात मारूंगा 60 करोड़ को और हम सारे कर्जे में जाएंगे इकट्ठे खुशी खुशी, पर मूवी 6 महीने के बाद ही आएगी OTT पे. नहीं, उस टाइम पे टू रिकवर द लॉसेस उसे मूवी सेल करनी ही पड़ती है अच्छे प्राइस पे और 4 वीक में मूवी OTT पे आ जाती. तो ये सबसे बड़ा पेच है कि OTT selling price is not fixed. It depreciates by the weeks. And why does OTT pay more for movie coming to them sooner? The answer is subscriber trust. Netflix का सब्सक्राइबर जो सोची बैठा है कि यार इस मूवी का थिएटर में क्या देखना, अभी ये तो आ जाएगी 3-4 हफ्ते में OTT पे, उसकी बात सच होती है अगर Netflix टाइम पे मूवी लाकर उसे दे देता है तो वो कहता कि हाँ भाई मेरी बात सच हो गई, आगे से ऐसा ही करा करना है. तो you see, this is a whole cycle that feeds itself and it starts with us, the audience. Once we don't go to the theaters assuming it will come on OTT, things starts to fall in place on its own. This is the exact same reason why Lal Singh Chaddha was put on Netflix 4 weeks after its release, whereas Amir Khan was bragging about how we need to keep at least 6 months theatrical window. Of course, it must come on OTT and audiences should watch the film on OTT also, but we must give the audiences a clear choice. If I want to watch a film in cinemas, then I come to the cinema, and if I don't want to watch it, no problem. Right. Then I have to wait for 6 months for it to come to OTT. Which is what is happening with. What in reality happened was that his movie flopped and he and his co-producer, and mind you, it was a very expensive movie. So the movie flopped and him and his co-producers came under a lot of debt. So they recovered the cost of filmmaking by selling it to Netflix
under 4 weeks and he failed on his promise. He evaded that with Sitare Zameen Par, side note, without success, because it was made in a very low budget, around 20 to 30 crores, without his fee. It was all his money. उसमें को प्रोड्यूसर या बड़े स्टूडियो नहीं थे, सिर्फ इसका ही पैसा इसने दांव पे लगाया था, वो भी इसकी एक्टिंग फीस को छोड़ के। काफी कम बजट था उस मूवी का, 20-30 करोड़। जो उस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रन में, जो भी उसका ठीक ठाक बॉक्स ऑफिस रन था, उसमें उसने 20-30 करोड़ रिकवर किए। उस टाइम पे भी नेटफ्लिक्स का इसे ऑफर आया हो सकता है 120 करोड़ का या 100 करोड़ का, कि आप 4 वीक्स के बाद मूवी हमें दे दें, पर इस पे वो लापता लेडीज वाला भूत सवार था, जो दैट वी हैव डिस्कस्ड इन अ प्रीवियस वीडियो. So he declined that offer and decided to go with YouTube renting, which obviously flopped. No one watched it on YouTube. तो YouTube से इसकी सिर्फ रेवेन्यू आया होगा 2-3 करोड़ का मैक्सिमम. पर उसमें भी मिसकंसेप्शन ये है कि ऐसा नहीं है कि वो आज भी वो 120 करोड़ की बेच देगा. अभी जब 4 वीक विंडो निकल गई तो आपकी मूवी अभी डेप्रिशिएट होनी शुरू हो गई. आज अगर वो जाएगा नेटफ्लिक्स के पास मूवी बेचने के लिए तो उसी का ही आज वो सिर्फ 10 या 20 करोड़ ऑफर करेंगे. So that was the video how OTT platforms like Netflix, Amazon have become so powerful, and they have been very successful at shortening the theatrical windows in Bollywood, which is at 4 weeks right now, and audience fully support it.